अभी हम बुद्ध वंदना करने जा रहे हैं। तो बुद्ध वंदना करने से पहले सभी से निवेदन है कि वो अपनी हाथ जोड़े और तथागत बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिवार वंदन करे, अभिवादन करे, एक साथ करे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शूरामेरय मज्ज उपमादक्षाण वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवति। स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको अकालिको एहि पस्सिको औपनायिको पश्चतं वेदितव्यो विन्युहीति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावक संगो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति। Very, very good morning to everybody joining here. समन्ता चक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता तद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोक्तदं धम्माश्रवणकालो अयं वदन्ता। धम्माश्रवणकालो अयं वदन्ता। धम्माश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय,
नमो संघाय। हे चक्रवालवासी अर्थात विश्व में रहने वाले सभी प्राणी, आज महामानव तथागत बुद्ध की संदेश की यहाँ पर अवसर है, तो आप सभी को यहाँ आमंत्रित है, आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं, आप सभी आए और इस धम्म देशना के लाभ उठाएं, जो आदि में कल्याणकारक है, जो मध्य में कल्याणकारक है और जो अंत में कल्याणकारक है। Homage to him, the blessed one, the perfect one, the supremely enlightened one, my dear friend, धम्म फ्रेंड। तो आज की जो धम्म देशना की जो विषय वस्तु है वो है शील समाधि कन्या या मोरालिटी, माइंडफुलनेस और विजडम। इससे पहले हम थोड़ा सा सभी प्राणी मात्र के जो सार्वजनिक व्यवहार है, जो सार्वजनिक स्वभाव है, जो प्रकृति है, उसके बारे में थोड़ा सा जाने कि क्या है सभी प्राणी के सार्वजनिक स्वभाव, क्या है सभी प्राणी की सार्वजनिक प्रकृति। ये स्वभाव ऐसा है कि संस्कृत में एक कहा जाता है, आहार अनिद्रा भय मैथुन सामान्य मेतात पशुभी नराण। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार जो स्वभाव है ये सभी प्राणियों में पाया जाता है। ये नर में या पशु में, ये सभी प्राणियों में पाया जाता है। आहार यानी फूड, निद्रा यानी स्लीप, रेस्ट, भय यानी फियर और मैथुन यानी रिप्रोडक्शन। लेकिन इससे आदमी या जिसको हम मनुष्य कहते हैं, तो ये मनुष्य जो है ये कैसे अलग है। तो यहाँ पर एक और कहावत है कि सामान्य मेता नारायण धम्मे ही तेसम अधिक विशेषा। धम्म बोल के जो एक चीज है वो अधिक विशेष चीज है जो कि आदमियों में पाया जाता है। धम्मे ही तेसम अधिक विशेष, धम्मे नहीं न पशु भी समाना। अगर वो धम्म नहीं है तो वो पशु के साथ समान है। तो इस प्रकार धम्म ही आदमी को पशुओं से भिन्न करता है, धम्म ही आदमी को दूसरे जानवरों से भिन्न करता है, दूसरे प्राणियों से भिन्न करता है, और धम्म ही आदमी का एक मापकाठी होती है, एक मापदंड होती है जिससे हम उनको आदमी कह सके। नहीं तो फिर आदमी सिर्फ दो पांव वाला एक जानवर ही कहना उचित रहेगा। तो ये धम्म क्या है, ये धम्म हमको कैसे ऊपर उठाता है और ये धम्म से हम कैसे पूर्णता की ओर जाते हैं, आज इसके ऊपर थोड़ा सा दृष्टि डालें। तो सबसे पहला चीज है कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं। सभी प्राणी की सुख चाहने की एक स्वाभाविक प्रकृति है कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं। ऑल द बीइंग वांट हैप्पीनेस, नो बीइंग कैनॉट लिव विदाउट हैप्पीनेस। तो सभी अगर सुख चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सब दुखी है। तो ये दुख तो सब दुखी तो सब है, इसका अनुभव तो है सभी को, लेकिन सब ये दुख को जाहिर नहीं करते कि हम दुखी हैं। लेकिन ये दुखी है क्योंकि सब सुखी होना चाहते हैं, ये इसलिए वो दुखी है। तो दुख होने की या फिर दुखी होने की जो लोग कारण ढूंढते हैं कि हम लोग क्यों दुखी है, तो सबसे पहले देखते हैं कि दुखी होने की कारण है कि वो अपने को कुछ पूर्व जन्म या फिर कोई ईश्वर या फिर कोई किसी के अभिशाप या किसी प्रकार की जो कर्मकांड में गलत हो गया हो, तो इस प्रकार चीजों में दुख के कारण ढूंढना शुरू करते हैं। तो उनको कुछ लोग ये बताते हैं कि तुम पूर्व जन्म में ऐसा पाप किया, ऐसे गलत काम किया, इसीलिए इस जन्म में तुम दुखी हो। कुछ लोग ये बताते हैं कि तुमको जो बनाया
या फिर तुमको जो नियंत्रण कर रहा है, तो उसके वजह से उनको तुम संतुष्टि नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आज तुम दुखी हो। तो इस प्रकार के दुख के कारण मनुष्य ढूंढते रहता है, और दुख के कारण अलग अलग काल्पनिक वस्तु में वो ढूंढते रहता है, लेकिन दुख के सही कारण उसको समझ में नहीं आता। और जब दुख के सही कारण ही समझ में नहीं आता, तो दुख के निदान या दुख के समाधान की ओर वो जा नहीं पाता, वो आगे बढ़ नहीं पाता। यही कारण है कि दुख के समाधान हो नहीं पाते। फिर दुख के कारण के लिए, दुखी होने के कारण के लिए वो दूसरी बात देखता है कि अपने जो भौतिक वस्तु के ऊपर देखता है कि पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, या फिर गाड़ी बंगला नहीं है इसलिए दुखी है। ये सारे पार्थिव वस्तुओं के ऊपर वो देखता है, ये भौतिक वस्तुओं की नहीं होने के कारण उनको वो दुखी है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन फिर भी एक सोचने वाली बात है। जी जी। तो ये दुख, ये दुखी जो है, तो भौतिक वस्तु जिसको प्राप्त हुआ है वो भी दुखी है। बड़ी आश्चर्य की बात है, जो पैसे के लिए आदमी सोचता है पैसा हो जाए तो मेरे दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक पैसे होने वाले में भी दुख है। जब आदमी देखता है कि मेरे पास तो गाड़ी बंगला आ जाए तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा, तब आदमी देखता है गाड़ी बंगला जिसके पास है वो भी दुखी है। करोड़ों रुपए के बिल्डिंग बनाए हैं लोगों ने, और आकर के पार्क में सोते हैं और अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे दुख के कारण ये कोई बाहर चीजों में नहीं है, कोई काल्पनिक वस्तु में नहीं है, कोई कल्पना में नहीं है। हमारे दुख के कारण हमारे अंदर में है। तो अंदर को झांकना चाहिए, अंदर को देखना चाहिए। तो यही काम तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले दुख के सही कारण को ढूंढने के लिए वो घर छोड़ करके दुख के सही कारण ढूंढने के लिए बहुत कठोर तपस्या किया। तपस्या यानी रिसर्च किया, गवेषणा किया, खोज निकाला, और खोजने के बाद जो अनमोल सूत्र पाया, वही सूत्र को उन्होंने 45 साल तक 45 साल तक सभी प्राणी के सुख के लिए, सभी प्राणी के हित के लिए उन्होंने सबके पास पहुंचाया, और सब लोगों ने उसी सूत्र को लेकर के अपने जीवन को सुखी बनाया। और आज भी इसीलिए हम तथागत बुद्ध को अपने सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और हम अपने हृदय में उनको रखे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा दुख को देखा, दुख का कारण को ढूंढा, दुख के निदान भी बताया, समाधान भी बताया, और दुख समाधान होने की मार्ग भी बताया। तो उन्होंने दुख के कारण क्या बताया? तो सबसे पहला कारण बताया कि दुख को हम समझ नहीं पाते। दुख को नहीं समझ पाना ये सबसे बड़ी दुख है। यानी हमारे पास प्रज्ञा की जरूरी है, यानी हमारे पास समझ की जरूरी है, ज्ञान प्रज्ञा की जरूरी है। तो ये प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा नहीं होने की वजह से हम दुख को समझ नहीं पाते, दुख के कारण को समझ नहीं पाते, और दुख का निदान को समझ नहीं पाते, और दुख निदान के मार्ग को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए हमने इधर उधर भटकते रहते हैं, और बहुत सारी चीजों की शरण लेते हैं, और फिर हमने बहुत सारे जटिल कर्मकांडों से फंस जाते हैं, और हम अपने आप को गुलाम बना देते हैं। तो इस प्रकार दुख का पहला कारण उन्होंने दिया कि अज्ञानता ही दुख है। सारे चीज अज्ञानता से आती है। इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल द इविल। इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ सफरिंग। कैसे अज्ञानता से दुख होती है? क्योंकि अज्ञानता की वजह से हमारे अंदर में हम काफी कई संस्कार पैदा करते हैं। संस्कार मत यानी मेंटल फॉर्मेशन, संस्कार पैदा करते हैं हमारे। उसके बाद संस्कार के बाद उन्होंने एक चेन बनाया, 12 ठो निदान का चेन बनाया, 12 ठो कड़ी बनाया उन्होंने। तो अविद्या, पहला बोला अविद्या, अविद्या से संस्कार पैदा होती है, संस्कार से विज्ञान पैदा होती है, जिसको रिलिंकिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं हम लोग। तो विज्ञान से नाम रूप पैदा होता है, माइंड और मैटर। नाम रूप से षडायतन, 6 सेंस पैदा होता है। षडायतन से ये हस्त या कंटैक्ट पैदा होता है। कंटैक्ट से आपका वेदना या फीलिंग्स पैदा होती है। फीलिंग से तन्हा, क्रेविंग पैदा होती है। क्रेविंग से उपादान, अटैचमेंट पैदा होती है। अटैचमेंट से भव यानी बिकमिंग, और बिकमिंग से बॉर्न यानी जाति, और जाति से जरा, मरण, व्याध,
व्याधि और मृत्यु, इस प्रकार दुख के पहाड़ हम लोगों ने एक चेन के माध्यम से बनाए रखते हैं। तो ये सारे चीजें उत्पन्न हुआ अविद्या से, ये सारी चीजें अज्ञानता के वजह से ही हमने हमारे अंदर की जो तृष्णा है, ये तृष्णा या फिर जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उपादान है, ये सारे चीज हमारे अज्ञानता के वजह से हुई, और अज्ञानता की वजह से हमारे तृष्णा दाना बांधा, दाना बांध करके उपादान बनाई, उपादान बनाने के बाद उन्होंने दुख को बनाया। ऐसे ये चेन हर एक प्राणी में काम करती रहती है। उसी को बुद्ध ने अपनी भाषा में उसको पटिच्च समुपादक है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। जैसे कि कोई भी कार्य जो है बिना कारण में होती नहीं, इस प्रकार हर एक कार्य जो है अपने अपने कारण से लिंक रखती है। तो इस प्रकार दुखों की हमने बुद्ध ने बताया कि अज्ञानता दुख के कारण है, तो अज्ञानता को दूर करने के लिए हमको चाहिए प्रज्ञा, चाहिए हमको प्रज्ञा चाहिए। तो प्रज्ञा भी 3 स्टेप में आती है। तो पहला है स्रोतमयी प्रज्ञा, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जिस चीजों से हम हमारी जितनी इंद्रियां है, ये सारी इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं, इसको हम स्रोतमयी प्रज्ञा कहते हैं। जो जो माध्यम से हमारे अंदर आता है, जो जो इंफॉर्मेशन आती रहती है, ये सारे स्रोतमयी प्रज्ञा है। लेकिन स्रोतमयी प्रज्ञा प्रज्ञा नहीं है, क्योंकि स्रोतमयी प्रज्ञा से बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी हमारे अंदर आती है। उसके बाद जब जानकारी आती है, जानकारी के बाद उसके ऊपर हमने चिंतन करते हैं, और उसी स्टेट को हम कहते हैं, उसी स्तर को हम कहते हैं चिंतनमयी प्रज्ञा। यह प्रज्ञा का दूसरी स्टेप हो गया, ये चिंतनमयी प्रज्ञा। तो हम उसके ऊपर चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उसको अनुशीलन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हमारे चिंतन कितना सही है, ये अपने निर्भर करता है कि हम कितना सही है। तो हम अगर अच्छे होंगे, हम अगर सही होंगे, तो हमारे चिंतन भी सही होगा, और जब चिंतन सही होगा तो हमारी जो नेक्स्ट जो स्टेप है प्रज्ञा की, वो भावनामय प्रज्ञा, जो कि हम अपने अंदर में अनुभव करते हैं, जो हम अपने भावना से या फिर जब भवित होता है, हमारे अंदर घटित होता है, हम उसको फील करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं भावनामय प्रज्ञा। तो यहाँ जो चिंतनमयी प्रज्ञा जो है, चिंतनमयी, चिंता करने के बाद, चिंता करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को बुद्ध ने कालाम सूत्र में कहा कि कोई भी चीज को इसीलिए मत मानो क्योंकि वो बहुत दिनों से कहे आ रहे हैं, कोई भी चीज को इसलिए मत मानो क्योंकि वो एक बहुत बड़े प्रभावी व्यक्ति से बोला गया है, कोई भी चीज को इसलिए मत मानो क्योंकि वो बहुत आपके धर्मशास्त्र में लिखी गई है, कोई भी चीज को इसलिए मत मानो क्योंकि वो कर्म आपके कर्मकांड को खुद करता है, कोई भी चीज को इसलिए मत मानो कि कोई आपको अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार बुद्ध ने सारी चीज को मना किया, बोला कि वो अपने अनुभव में जानो, अपने अनुभव के जानने के बाद जो प्राप्त होता है उसी को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान जो अपने अनुभव से उतरे, उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो वो भावनामयी प्रज्ञा। तो भावनामयी प्रज्ञा के लिए स्रोतमयी और चिंतनमयी बहुत जरूरी है। लेकिन स्रोतमयी और चिंतनमयी जो है, कि हम जैसे है हमारे चिंतन भी वैसे होता है, तो इसीलिए हम अपने आप को सही करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए प्रज्ञावान होने के लिए हमको और एक चीज बुद्ध ने बताया कि हम शीलवान होना चाहिए। तो प्रज्ञावान होने के लिए और एक प्रज्ञा का क्या परिभाषा है कि प्रज्ञा का मतलब होता है वही ज्ञान जो, जिस ज्ञान की वजह से हम दुख को अनुभव कर सकते हैं, दुख को जानते हैं, जिस ज्ञान की वजह से दुख के असली कारण तक पहुंच पाते हैं, जिस ज्ञान की वजह से हम दुख की निदान या दुख की समाधान को हमको मुलाकात होती है, और जिस ज्ञान के माध्यम से हमारे दुख निदान के मार्ग हम ढूंढ निकालते हैं, या फिर दुख की जो समाधान की जो मार्ग को हमको मिल जाता है, तो इसको प्रज्ञा कहते हैं। तो ये प्रज्ञा मिलने के लिए हमारे पास एक चीज होना जरूरी है कि हमको शीलवान होना जरूरी है। और शील क्या है? मोरालिटी है। कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो कई चीजों से हमारा मुलाकात होती है, निर्जीव से होती है, सजीव से होती है, प्राणी से होती है, उद्भिद से होती है, और आदमी से होती है, जानवर से होती है, पक्षियों से होती है, किसी भी चीजों से हमारा मुलाकात होती रहती है। ये मुलाकात जो होती रहती है, तो हमारा और उनके बीच में क्या संबंध होना चाहिए, किस प्रकार की हमारे इंटरेक्शन होना चाहिए, किस प्रकार के व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीज दूसरों के लिए और अपने खुद के लिए जो हितकारी है, उसी चीज को हम मोरालिटी कहते हैं। जिसके वजह से, मोरालिटी के वजह से हम ना तो दूसरों को हानि करते हैं, ना हम अपने आप को हानि करते हैं।
तो जिस माध्यम से हम दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं और हम अपने आप को भी लाभ पहुंचाते हैं, उसी को हम शील कहते हैं। शील को एक अर्थ में ये भी कहा गया है कि फाउंडेशन कहा गया है। इसीलिए हमने कोई भी जब भी जो इमारत बनाते हैं तो हमने शिलान्यास करते हैं। शिलान्यास का मतलब होता है फाउंडेशन डालते हैं। जिस इमारत की, जिस बिल्डिंग की शिलान्यास, शील यानी जो फाउंडेशन है, नींव जो है, वो अगर स्ट्रांग नहीं है तो इस बिल्डिंग के ऊपर कोई निरापद, इस बिल्डिंग के अंदर में कोई निरापद रह नहीं सकता। तो इसीलिए कील का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार आदमी के लिए कील एक फाउंडेशन के जैसे काम करता है। शिलान्यास, कील मतलब पत्थर। तो वो कील दो प्रकार की बुद्ध ने कहा है। तो पहला कहा है वारित शील, मतलब जो नहीं करने के लिए जो दिया है, और दूसरा शील है चारित शील, जो करने के लिए बोला है। तो पहला क्या नहीं करने के लिए बोला है? पाणातिपात वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। प्राणी हिंसा से मैं विरत रहने की सील लेता हूँ, या फिर मैं प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करूंगा। तो ये हिंसा, ये तीन प्रकार की हिंसा होती है। एक कायिक हिंसा होती है जो हम शरीर से करते हैं, दूसरा वाचिक होती है जो हम वाणी से करते हैं, लेकिन इससे भी और एक हिंसा है जो मानसिक है, जब हम मन से सोचते हैं। तो इस प्रकार मानसिक, कायिक और वाचिक, मनोवाक काया, इस तीन माध्यम से हमने हिंसा करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं ये हिंसा से ऊपर उठना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो हिंसा नहीं करना शील है। तो हिंसा को ऊपर उठ, ये वारिस शील हो गया, ये इसको वारण किया गया है। और इससे ऊपर उठने के लिए हमने क्या रखे हैं कि चारित शील रखे हैं। क्या? मैत्री करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख के ऊपर शेयर करना चाहिए, मैत्री करना चाहिए। ये मैत्री की वजह से हमारे अंदर की हिंसा की भावना कम होती जाएगी। मैत्री की वजह से हमारे अंदर करुणा जगेगी और हमारे अंदर में हिंसा की भावना खत्म हो जाएगी, हम हिंसुक नहीं हो जाएंगे। उसके बाद है चोरी नहीं करना, या फिर लालच नहीं करना, या अदत्त द्रव्य जो है, जो आपको दिया गया नहीं है, उसके प्रति लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, चोरी नहीं करना। तो ये इस प्रकार की जो वारिसशील है, इस वारिसशील के बारे में दिए हैं कि चारित्शील का मतलब होता है कि क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, नहीं, त्याग करना चाहिए, दान देना सीखना चाहिए। दान के माध्यम से हमारे अंदर की जो कंजूसपन है, हमारे अंदर की जो जो लालसा है, जो हमारे अंदर में जो लालचपन है, वो लालचपन को हम खत्म कर सकते हैं। तो दान की अभ्यास करना चाहिए, दान की एक संस्कृति हमारे अंदर में डेवलप कराना चाहिए। तो ये हो गया आपका दूसरा शील। तीसरा शील है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और आज जो चीज पूरे समाज में सबकी, मतलब एक सिरदर्द बन गया है कि आज हमारे जो है सोसाइटी में एक व्यवस्था ठीक नहीं है, अव्यवस्थित है, कोई निरापद नहीं है, कोई कोई सेफ नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बुद्ध ने दिया कि व्यभिचार से विरत रहना चाहिए। और व्यभिचार कैसे होता है आदमी का? आदमी जब विलास व्यसन में ज्यादा रहता है तो आदमी के अंदर में कामना और वासना पैदा होती है। तो बुद्ध ने कहा कि हमने सदाचार या सादा जीवन यापन करना चाहिए, जिसके वजह से हम वो व्यभिचार से अपने आप को मुक्त रख सके। और व्यभिचार की जो है, ये शुरुआत से, बचपन से हमने बच्चों को संस्कार डालना चाहिए, क्योंकि हमने बच्चों से सिर्फ उनके मार्क को उम्मीद नहीं रखना चाहिए, कितना मार्क लाया, बल्कि एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने की हमने जिम्मेदारी लेना चाहिए और अपने बच्चे को शील पूर्वक बनाना चाहिए। तो इसके लिए हमने सादा जीवन यापन, सादगी की जीवन यापन करना चाहिए। सिंप्लिसिटी जो है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, इस प्रकार के जीवन यापन करना चाहिए। और उसके बाद मूसावादा का मतलब है ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए जो वाक्य दूसरों को हानि पहुंचाए, जो वाक्य दूसरों को आघात पहुंचाए, जो वाक्य दूसरे की अनिष्ट करे, ये सारे वाक्य नहीं बोलना चाहिए। और वाणी से हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई समाज में कोई व्यक्ति में किसी प्रकार की वो दुखी नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, कर्कश वाक्य नहीं बोलना चाहिए, या हमारे वाणी की सदुपयोग करना चाहिए। तो वाणी की सदुपयोग के लिए और एक अभ्यास डालना जरूरी है,
वो है सत्य का अभ्यास करना चाहिए। हम जितना सत्यवान होंगे, जितना हम सत्य के प्रयोग करेंगे, जितना हम सत्य का उपयोग करेंगे, उतना हम सत्यवान होंगे और हमारे वाणी पवित्र होती जाएगी। ये हो गया आपका वाणी की। और पांचवा है सूरा मेरे या मध्य प्रमादत न वेरमणि शिक्षापदं समादया। इसका मतलब होता है कि हमने किसी प्रकार की नशीली पदार्थ से दूर रहेंगे जो हमको बेहोश करता है, और बेहोश की वजह से हम फिर गलती काम शुरू करते हैं। तो इसीलिए सिर्फ नशीली पदार्थ से नहीं, प्रमाद ठाना, जो जगह, जो स्थान प्रमादपूर्ण है, जैसे जुए की अड्डा हो गया या फिर और दूसरा कोई जो जगह है जहाँ पर प्रमाद पूर्ण है, जो अनहोलसम जो प्लेस है, जिस जगह पे ठीक नहीं है, उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार की अ, हमने जो बुद्ध ने सील दिया, ये वारित्रशील भी दिया और चारित्रशील भी दिया। उसके बाद इसी की वजह से हम अपने आप को संपूर्ण करते हैं। एक आदमी परिपक्व होता है, शीलवान होता है, सदाचारी होता है, सदाचरण करने वाला आदमी होता है, तो उसका चिंतन जो है वो सदाचारी होता है, उसका चिंतन भी अच्छा होता है। लेकिन ये जो सील है, ये सील भी फ्लक्चुएट होते रहता है, ये सील भी परिवर्तनशील होते रहता है। मेरे हिसाब से सील जो है, जब हम अच्छे लोगों की मित्र मंडली में बैठते हैं तब हम सदाचारी बन जाते हैं। फिर जब हमको प्रतिकूल परिवेश मिलता है, फिर हम हमारे जो सदाचरण से हमने फिर हट हट जाते हैं। तो इसका मतलब है हमारे जो सदाचार है, ये सदाचार हमारे मानसिक तौर पर हमने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारा मन को सही ढंग से स्थिर करना चाहिए, मन को शक्तिशाली करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने धम्मपद का पहला गाथा में बोला है कि मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो तथा मनोमया मनसाच पदुत्थे न भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति सत्संगो वहतो पदम। अर्थात मन ही, माइंड इज द फोर रनर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। मन जो है ये सारे प्रवृत्ति की अग्रगामी है। मन ही सारे प्रवृत्ति को लीड करती है, नेतृत्व लेती है। इसीलिए मन से ही सारे जो चैतसिक प्रवृत्ति है, ये सारे उत्पन्न होती है। हम बोलते भी है, करते भी है, ये सारे मन से उत्पन्न होती है। तो यहाँ कहा गया है कि मनसा च पदुत्थे न भास सिवा करो सिवा। जो आदमी, जो प्राणी, जो आदमी ये मन, मलिन मन से या दूषित मन से, कलुषित मन से बोलता है या कुछ करता है, तो उसका, उसको दुख ऐसे पीछा करता है जैसे चक्रंगो बहतो बदन। जिस प्रकार चक, चक्र जो है, चक्का जो है, जब बैलगाड़ी होती है और चक्का जो है पाँव के बैल के पाँव को जैसे फॉलो करती रहती है, जैसे पीछे 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 चलती रहती है, और बैल सोचता है कि मुझे चक्का जो है मुझे पीछे दौड़ा रही है, और आगे आगे बढ़ती रहती है। इसी प्रकार दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो इसीलिए मन सबसे मूल है, मन ही ये दुनिया मनोमय है, और सब मन से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मन को देखना, मन को ठीक से परीक्षा करना, मन को संयत करना, मन को नियंत्रण करना और मन को सही दिशा में लेना, क्योंकि मन ही पूरा शरीर की जितना एक्टिविटीज है, शरीर के जो कार्यकलाप है, उस सारे कार्यकलाप को मन ही प्रभावित करता है। इसीलिए इतनी प्रभावशाली मन को हमको जानना चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने हमको एक अच्छा तरीका दिया है, क्योंकि मन को पहचानने के लिए उन्होंने ध्यान दिया या फिर समाधि दिया। समाधि दो प्रकार की होती है। पहला समाधि है कि समथा, यानी मन को शांत रखने की प्रक्रिया दी है। मन को शांत रखना चाहिए, जिसको दिए आनापान सति के माध्यम से, या अपनी जो सांस प्रश्वास को उसको आलम्बन बना करके हम अपने मन को शांत कर सके। पहले शांत करने के बाद मन के अंदर में जो हलचल है, मन के अंदर में जो सारे प्रवृत्तियां हैं, उसको देख करके उस सारे प्रवृत्ति को, जो दोष है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो मोह है, जो सारी गलत प्रवृत्ति को हमने देख करके उसको निकलना चाहिए, और मन को निष्कलंक या मन को निर्विकार करें। निर्विकार करने से हमारे मन जो है पवित्र होगा, और ये पवित्र मन जिसका है वो मन स्ट्रांग होगा, डिटरमाइंड होगा। और डिटरमाइंड मन जो है दिलवान होंगे, और दिलवान के वजह से हमारे जो चिंतन होगी वो सही चिंतन होगा। इसी हिसाब से शील यानी मोरालिटी, हम दिलवान हो जाएंगे
समाधि यानी शील को मजबूत करने के लिए समाधि की जरूरत है, यानी मन की मजबूती की जरूरत है। और प्रज्ञा यानी समझ, या मतलब जो दुख को समझना, दुख के कारण को समझना, दुख के निदान को समझना और दुख निदान के मार्ग को समझना। इसी प्रकार शील और समाधि प्रज्ञा के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हैं और अपने जीवन को दुख से मुक्त कर सकते हैं। सिर्फ अपने को नहीं, पूरे समाज को हम दुख से मुक्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये पूरे विश्व को हम दुख से मुक्त कर सकते हैं और विश्व में शांति ला सकते हैं। यही बुद्ध की जो दिए हैं, जो संदेश दिए हैं बुद्ध की, आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने हर एक प्राणी के लिए, हर एक प्राणी के लिए, प्राणी की सुख के लिए, हर एक प्राणी की जो हित के लिए उन्होंने जो सूत्र निकाला है, वो सारे सूत्र इसी में समाहित है, शील, समाधि और प्रज्ञा। इस हिसाब से हम अपने जीवन को सारे बंधनों से मुक्त करके हम अपने जीवन को कुशल पूर्वक रख सकते हैं और हम खुद सुखी हो सकते हैं और हमने दूसरों को भी सुखी कर सकते हैं और इसी प्रकार सभी का हम मंगल कर सकते हैं और विश्व में एक शांति की वातावरण हमने सृष्टि कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नमो नमो धर्माय, नमस्कार। यस, थैंक यू बनते हैं। बहुत अच्छा प्रवचन रहा और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, आपने हमें प्रवचन दिया है, शील समाधि प्रज्ञा। तो अभी जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी को कुछ सवाल है तो अभी पूछने को अपन उनको अनुमति देते हैं। So please, like, if anyone has any questions, please go ahead, raise their hand, or type in your question in the chat window. So please go ahead. बनते जी, एक क्वेश्चन है। जी महेश बोल रहा हूँ। बनते जी, आप जापान में भी कुछ साल रहे हैं और काफी दोस्त ने पूछा है कि शिंगोसु सेक्ट, वो जो बुद्धिज्म में आपने किए है ट्रेनिंग, ये कौन सा सेक्ट है? जैन बुद्धिज्म का सेक्ट है या? नहीं, ये मंत्रयान कहते हैं इसको। शिंगुन मतलब जापानीज लैंग्वेज में मंत्र, जो मंत्रयान है महायान बुद्धिज्म के अंतर्गत आता है ये। तो ये जैसे सेम है जो तांत्रिक बुद्धिज्म, जो तिब्बतीन में जो बुद्धिज्म चलता है, वही ब्रांच है? It looks like there is some connectivity issue from Bhante's side. Okay, this is Paul. You can hear me. Hey, Paul. Give us a couple of minutes. Thanks for joining, though. We have a monk on our call who had joined from India. So we are just wrapping up that and then we'll pass on to you. Thank you. कौन लेना है? Mahesh, looks like there is a connectivity issue from Bhante's end. Okay, I'm going to call him on his cell phone. And okay. I don't know whether he's aware of that thing. I think he's probably talking there and we are not listening. So I will call him quickly. Yeah. In the meantime, does anyone have any questions for Bhante?
हेलो महेश जी। बनते जी आपके तरफ से थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है और आवाज नहीं आ रहा है। हाँ तो नहीं नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गया एक्चुअली। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ होता है। हाँ तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं आपका स्पीकर फोन ऑन रखता हूँ इधर, और किसी को क्वेश्चन होगा तो अभी पूछ सकेंगे। ठीक है। बनते जी आप थोड़ा वो आप जो बुद्ध विहार बना रहे ट्राइबल एरिया में, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्विकली? जी क्यों नहीं। आवाज आ रहा है? ओ जी आवाज आ रहा है। ओके जी हाँ मैं थोड़ा स्पीकर ऑन कर देता हूँ उसका। ओके। तो ऐसा है कि हमने उड़ीसा में जो सबसे पिछड़ा एरिया है वो नवरंगपुर है, जहाँ पर ट्राइबल लोग ज्यादा है। तो वहाँ पर हम लोगों ने एक आदमी है जिसका नाम प्रकाश नाथ, उन्होंने बेसिकली क्रिश्चियनिटी से आया है और उन्होंने कन्वर्ट होकर के बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया और उन्होंने हमको लगभग 2 एकड़ के अंदर 2 एकड़ जमीन दान किए और उन्होंने हमको बोले कि बंटे जी यहाँ पर आप बुद्ध विहार बनाइए और यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं तो वो बुद्धिज्म चाहते हैं और बुद्धिज्म को फैलाइए और यहाँ से पूरे उड़ीसा को भी हम बुद्धिज्म फैला सकते हैं। फिर वहाँ से हमने स्टार्ट किया 2006 को, जब बाबा साहब अम्बेडकर की जो धर्म जो ये है ना मतलब प्रवर्तन का जो सुवर्ण जयंती मना रहे थे हम लोग गोल्डन जुबली, तो 2006 को हमने उसको बनाए और 2006 से ही अक्टूबर 14 से उस जगह से हम शुरुआत किए और सब लोगों से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके सब लोगों से थोड़ा मदद लेकर के अभी उसका बुद्ध विहार का तैयार हल जो है वो हो गया है। और उसके बाद आपका जो किचन और जो लेट्रिन बाथरूम अभी वो प्रोसेस है, अभी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, इसके लिए सभी से थोड़ा सहयोग लिया जा रहा है। तो इस तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को कॉन्टैक्ट में भी लोग कॉन्टैक्ट में भी है और काफी लोगों का सहयोग मिल रहा है और इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं जगह में। हेलो हेलो, थैंक यू बनते जी, थैंक यू। अनिल गायकवाड़ जी ने कुछ बताया है। महेश बनते जी लाइक अनिल एक हमारे यहाँ एक अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि मिस्टर मानसा जैना एक सोशल एक्टिविस्ट है भुवनेश्वर, वो भी एक बुद्धिस्ट सेंटर बना रहे हैं ट्राइबल एरिया में उड़ीसा में। मानस जना को जानता हूँ मैं। ओके हाँ ओके ओके मानस जना, बहुत अच्छी बात है। ओके Again, guys, Bhamse ji going to appeal that if anyone would like to contribute anything for the Bhimra Buddha Vihara at Odisha area, so I put Bhamse ji's email address and the phone number. तो काफी मदद चाहिए। फोन नंबर आपको। ओके हाँ बंते जी आपका ईमेल और फोन नंबर दिया हो, जिनको भी कंट्रीब्यूट करना है गुड कॉज के लिए उधर। तो अनिल गायकवाड़ जी मुंबई से ज्वाइन हुए हैं और काफी लोग इधर है, तो उनको अपील कर रहे हैं हम लोग, जिनको भी कंट्रीब्यूट करना है बुद्ध विहार के लिए वो कर सकते हैं। और ये बुद्ध विहार जो है हमारे लोगों की पहली बुद्ध विहार होगी हमारे उड़ीसा इतिहास में, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लोगों के अपने प्रयास से जो है करेक्ट है। ओके महेश and everyone, are there any other questions for the Bhante now? Else we can move to the next speaker. भंते जी और एक अभी स्केड्यूल स्पीकर है हमारे पास इधर, तो हम लोग अभी वो सेशन चालू करेंगे। तो भंते जी अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच and I would like to be present here again and again, and I'm very much thankful all of you who have organized this program
so nicely. This is one of the part of your university. There is a Dhammadhanam, and in this way only we can all combinedly with our cooperation with each other, we can spread the Dhamma, spread the message of the Buddha, and we can establish a society of the just society. There is a society of enlightenment, and we can bring peace to the world. Thank you. Thank you, Banteji, and I will be in touch with you. And I will also request our group to be in touch with you. Yeah. Thank you very much. Thank you, Banteji. Thank you for joining today. Thank you. Okay. Oh, Buddha. Good night. Okay. Thanks, Mahesh, for all the coordination. Let's move to our next speaker. Now, we have Mr. Paul Guthrie. He is going to speak on the Declaration of Empathy. You guys must have already seen his details about the petition which is going on regarding Declaration of Empathy. So Paul is going to elaborate more, give us a little bit background as how it started, and he will also share more on like what more we can do, like organizations can contribute to cause like this. So Paul, it's all over you. Please go ahead, Paul. Okay, thank you, Sandeep, and greetings to you all, Jabin and Meta. I spoke with you last about 2 weeks ago, I guess, or maybe 3 weeks ago. Yes, but yes, Paul, that was before the 14th, before the signing of the petition. Yes, sir. Yes, sir. And since then, of course, on Wednesday, January the 15th, at the Congressional Auditorium in the U.S. Capitol building at Washington, D.C., we did meet. There was a meeting that was hosted by Congresswoman Eleanor Holmes Norton. And it took place, of course, on the 15th, on the 85th anniversary of the birthday of Dr. King, Dr. Martin Luther King. And at that conference, at that meeting, it was 17 African American slave families joined together, assembled, and we signed the Declaration of Empathy between the black people here in this country and the Dalits of India. It was signed by us and also by members of Congress. There was also present, there were 7 Dalit organizations who were present. We all spoke, they spoke, and I was given a chance to also speak, and so I took advantage of that opportunity to speak relative to the empathy that's held between our people here and the Dalit people of India. I do want to mention that during her remarks, the Congresswoman had committed herself to introducing a binding resolution into the Congress, which would strengthen the existing efforts being made by the United States government to try and get India to do more regarding the rights of her citizens. As you know, many of the laws are already on the books to protect the citizens of India from caste discrimination. And so she did mention that she would introduce a binding resolution into Congress. And this will be a major step forward when that is done. So that was a successful gathering. The declaration has since been placed online for
for other people and for the general population to sign as they deem appropriate. Now we're going to continue our stance and our help in getting helping the Congresswoman to introduce this binding resolution, because that's not going to be something that is easy. So we want to make sure that she has our full support, and also the support of all of her constituents, as well as general support from us across the country, as well as the Dalits who may want to also support. We want all of us to be able to stand together to make sure that this is done successfully. So that's just an update that the meeting did take place, and the proceedings went very smoothly. That was on the 15th. On the 14th, I might add, there was a roundtable discussion at a university there in Washington, D.C., Howard University, and that was, I'm told, a well-attended event. There was some press from India who had planned to be present at the event, but due to the visa situation as it has now developed between India and this country, in the wake of some political problems that had occurred in the recent past, those press persons were not able to make it to the event. However, they were forwarded footage as well as transcripts. So we're hoping that they will follow up with the press there in India to cover it. Okay. All right. Yeah, Paul. So, do you want to share more about, like, thanks for giving the background and what is going on right now, but how the participants or group, like different organizations, different groups we have across in India, US, how can they join this movement and how can they be a part of it? And if you can give us a little background, like what was the initiation of starting this movement? I think that will be great, Paul. Okay. It was brought together and organized by a group called the Quander Historical Society, and the Quander Society is a group that was formed by the family members of a slave that was freed by the first president of this country, George Washington. Of course, he had slaves. All of the presidents had slaves, and George Washington, he freed one of his slaves, and so this became a very famous slave, and his name was Quander. So someone in the Quander family, his name was Judge Quander. Judge Quander was one of the conveners of this meeting. Along with the Quander Historical Society, there was the Dalit Freedom Network, which you've probably heard of. They're a very well-known, I guess, Christian group, and I think they probably funded it or helped with some of the logistics behind the meeting. It was primarily those two organizations that were behind this. They called for it. They have connections there in the city, Washington, D.C.,
that enabled them to set this up. And they contacted me, and of course I was very pleased to take place in it. But that's how it basically began. That's how it started. Now, relative to your question of what can be done now, what can be done now is in terms of support. If they can get, or if we can get more people to sign on the declaration, that would be nice. I do want to mention that that the marketing of this proceeding perhaps could have been done a little more skillfully. But this is just a step in a direction. This is one effort, and it should be followed by several other steps. And that's where all of us, I think, can come in. We just have to support what took place on the 15th, and the way to do that is to sign the declaration. If anyone has not signed that, it's available online. It's called a Declaration of Empathy, and it can be found at declarationofempathy.com. Okay, so that's 3 words, Declaration of Empathy, but they're spelled as a singular word, declarationofempathy.com. So I think that's what can be done primarily to support that declaration is just to get other people to join in and to sign it. And of course, when the legislation is presented, a binding resolution, when that is presented, that's when we can really do much to help. So we'll all have to come together, and whatever it is that we have to do to show our support for that, that's going to be really helpful and very much needed. There's no scheduled time that I know of as of right now as to when that's going to take place, but she did say that it's going to take place this year. So that'll be a major step on the political level. One of the things that is very vital and very important for us to do is to create a groundswell, grassroots group movement to help to push in the direction of where we're trying to go relative to the freedom and the equal rights of all of the citizens of India. Particularly and specifically, we're talking about the Dalit people of India, and generally about the casteism that is widely practiced. So we need to create a grassroots movement, something that's going to bring about real and meaningful change. And one of the things that must be focused on is we need to, in creating such a movement, we have to focus on marketing. Marketing is the principal motor that will get things done. Without marketing, we can have a good cause, but if that cause is not properly marketed, it will just stay a good cause. So marketing is very important. World Dhamma Foundation, we're doing something in that regard right now. So we're taking what had taken place on the 17th, and we are supporting that and pushing that all that we can. But it's not the only front that we have to battle on. So
we're pushing forward in some other areas right now as we speak. We're forming a campaign that we are calling wearedalit.org. And that looks very promising. Its focus is to create a grassroots movement by educating the general population. It's a inclusive movement. So it's not just for black people in this country. It's for all people of goodwill to learn about and to know about the current situation as it exists there in India. And so what we're looking for, if anyone has any photographs, high-definition photographs, we need photographs. We need writers. We need cultural advisors, because there are some cultural nuances that exist between the two different countries that we don't know about. Those cultural differences, those cultural nuances. Certain things will go over very well if they're done in a certain way there in India, where we will not know what those things are, those nuances. So anyone who has any kinds of skill sets that could be helpful in regarding the wearedalit.org movement, we're calling for those persons to step forward and if they can help us in any way possible, web design, project managers. We'll be doing most of the work, but just being able to have someone who we can speak with, who is who are very familiar with the story of the Dalit people will be helpful to us. There was a movie that was made, or there was a grassroots movement that was called Coney 2012, and many of you may have heard of that. It was pushed and marketed by a group called Invisible Children. We have had 3 meetings since the 15th, since I've come back to San Diego. I've had 3 sit-down meetings with that group, Invisible Children. They know how to market an idea. They know how to take a story and make that story viral. And they were telling me that what has to be done in order for us to get this ball really moving is we have to simplify our story. So rather than go into the history of the Red Vedas and the Manu Smriti and the 2,000-plus year history and complicate it, it has to be boiled down to a grade school level. It has to be simplified, and the story has to be made personified. So we want to tell the story of the Dalit people as it exists here and now through the eyes of a child, and produce maybe about a 14-minute movie or video, just a short 14-minute video, because the span of attention of the average citizen here in this country, as you may have noticed, is very short. And so in the marketing of this movement, we want to simplify and tell a very clear and cogent story that makes the participation something that will benefit the viewer, which was one of the problems, I think, that was not addressed in the declaration. We didn't have anything to do with the marketing of that. So we're trying to market something
in addition to that, we want to market something that is able to garner support. We want celebrity support. We want the support of celebrity. That's cultural people, icons, cultural icons, famous persons who bring with them groups of people. We want the support of the political leaders and the general citizen. So that's something that is being done right now. And if anyone has any of those skill sets that can be of help to us, we would ask that you contact us and just let us know. We know that your time is very valuable, so we don't want to use much of your time. But if there's just a word or two that you can share with us that will help us and guide us, that will be greatly appreciated. And I can be reached at paul@wearedalit.org. Or you can call me directly on my phone anytime. So I did want to introduce that. We want to make it something modern, inclusive, young, because we want to get school-aged people involved. Those are generally the segment of the population who have energy and who want to get things done, and they like to get things done. If it's fashionable, they will jump on board. They will wear the T-shirts. They'll have the logo. It'll become a fashion statement. This is what happened typically during the 1960s. You know, the civil rights movement that took place here, it was a fashionable event. Many people don't know that, but if you were not involved in the civil rights movement as a young child, it meant that you were not in step with the fashion of that time. You know, we had a good cause, but it was the children who picked it up. It was the children who got things done, and this country did not change its policies out of any moral considerations. They changed their policies because there were pictures of grown men sticking dogs and fire hoses on children. And so those policies were changed probably out of an idea of shame that these pictures were being made known to the world. It was being broadcast at that time because the television was brand new, and every home had these images being broadcast into it of pictures of a very simple story. And it was that kind of marketing that just caught on like fire, so that it became fashionable. It became what needed to be done. And people just picked up on it, and next thing we knew, it was a large wave, a large movement. And we want to create, if not a large wave, we want to create some kind of change. And we can do that today when we get the people who have the proper skill sets, who can guide us and help us in that area. I want to just pause in case there's anything I said. Do you have any questions or comments? Yeah. Sure, Paul. Thanks for covering and giving more details about the activities and how members can participate. I'll just open the forum now to ask any questions. If there are any questions to Paul and any questions regarding declaration of empathy. But I also want to make a humble request to all of you that we have already shared the petition link. So please go ahead and sign it. Lalit, thanks for sharing on the chat window again.
So at least the first thing we can do is sign up the petition, which is declarationofempathy.org, and you can get more details on the website as well. So now we are open for questions. If there are any questions, please type up in the chat window or please raise your hand. So Paul, just to give you an outline, we are kind of like around 20 to 22 families right now which have joined across India, US, Canada, and yeah, and we are just opening the question and answer session, so I'm just reading the chat window as well. Lalit just said, Paul said that we can start a similar campaign in UK. So yes. Okay. That would be wonderful. Who is that? Yeah. Who said that? It's someone this is Lalit. In the UK. Yeah, Lalit, I'm unmuting it. Lalit, do you want to share something? Yes. Yeah, please go ahead. Yeah, I think some of you might have seen this Kony campaign, which Paul had just mentioned. So I think after this session you can see this YouTube video, and it's quite powerful. And certainly I think you can work with Paul, and he has really great ideas. I spent like a couple of days with him, and this is one of the area where we can work together to make people aware about the challenges and opportunities for Dalits in this world, in US and also in India, what is happening. So the campaign can be all over the world, I think, not only in US but all over the world, Europe and America. So we will need some volunteers, I think, what Paul was saying. So that's it. Thank you so much, Paul. Hey, Lalit, it's very nice to hear your voice again. And it was so nice to meet you and to speak with you when I did get the chance to meet you when you came out to San Diego. And congratulations on your studies that you completed. And it's very nice to hear from you. But yes, of course, we want to stay in touch with with you there in the UK. We're planning on doing this big. That's what we're aiming for. We want it to be successful. We want it to be big. We have some. I have a friend who has a art gallery on Rodeo Drive up in Beverly Hills. And one of the things that we want to do is have a red carpet event, and we have access to the venue on Rodeo Drive, which is very exclusive area up in Los Angeles. That's where the movie stars go and so forth. So we want to have movie stars. We want to have people in the music industry take a stand and join in. Once they join in, once their voices are signed on to this, you see, then we can make it fashionable. People ask one question, and we often overlook this question when we are creating a grassroots movement. But the one question that people ask is, what's in it for me? That's what the general population want to know. What do they get out of it? That's what motivates many people who, otherwise nothing will get done through them. If we offer them something, that's when their participation becomes present.
Now, you and I and all the people listening, we're already interested. We're already motivated. We need the help of those people who are not interested, who are not motivated. We need to find a way to include them so that they can become a part of the movement. So we have to educate them, and to educate them and share with them this concept so that it can become a viral movement. We have to be able to market efficiently and effectively through skillful means and methods. And those skillful means and methods is going to be by including the celebrities and the sports players on these football teams and basketball teams and baseball teams, including them in on it. So, so yes, we want it to jump the pond. As Paul, can you write? Yes. Yes, what I'm saying, if you can write down what specific things you need, like what kind of support we can provide. Whatever you have spoken, you just list down some of the things, so it will be clear to this. This is small number of participants, but online there are many more people. So just list down what is the concept and how we can all contribute. Okay. Thank you. And okay, yes, sir. Who do I send that to? Thank you. Sandeep? Okay, yes, sir. I'll send that to Sandeep. Is that okay? Yes, yes. Thank you. And then Sandeep will share it with the sure. With people yes. who need to know. Yes, sir. I will be happy to do that. Thank you. Thank you so much. Thank you, Lali. Thanks, thanks, Paul. Are there any other questions for Paul, or any other anything else anyone wants to share? Srikant, are you there? Srikant is there. He may be. He want to speak something. Okay, Srikant, go ahead. I have unmuted you. Srikant, go ahead. Okay. Anyone else? May I say briefly while they're deciding if they want to speak? Sure. Go ahead. Go ahead, Paul. We're thinking about telling this story through the eyes of a child. Okay. And we're thinking about telling the story through the eyes of a girl, so that we can focus on the issues, the general issues that are experienced, the day-to-day life that is experienced by a child, Dalit child, a girl, preferably. I'm thinking about a girl, to give not only those general things that are suffered by all of the Dalits, the discrimination that is experienced, but also to bring into it specific gender problems, gender issues, because we want to be able to speak to a broad group of people, a large group of people, men as well as women. So I'm just throwing that out there, that concept out there of the story being told through the eyes of a girl in a 14-minute video. You know, I think that might be something that would be powerful, more powerful than if it's a story told through a group of people. If it's personified, then it gives the viewer a chance to sort of identify with the protagonist, with the person who is who's telling this story. Paul,
Lalit, you are saying something? Lalit, you are saying something? Yes. It will be great if you're. You said that you're connected with this Jason Russell, who has made this powerful documentary, and I have seen this. I also participated in this campaign, Kony 2012. And if yes, and if they are on, if they can support you and us in this cause, this will be really great. And if you want to shoot anything in India, we are always there, and also we have some team who can help in documenting, like shooting some film. So, but if these people like Jason Russell, also some people you mentioned in the film or music industry, if they come on the board, that will be very powerful. Yes, yes. Okay. We do need footage, so we will put a call out for any footage that we can get, in any kind of footage, high definition footage, preferably, is very much needed. Now, I'm not going to be working directly with Jason. I'll be working with a Buddhist sister who works for that organization. They've presented her as the person who's going to address all of the questions and help me from this point forward. I've been working with some other members of that organization up until now, but in the future I'll be working through a person who is not Jason. We don't want too much to cross-pollinate the concepts that were carried in Kony 2012, so this will be completely separate from the Kony 2012 movement. There were some problems with that storyline, and we don't want those problems to come over into what we're doing. So we want to learn from them how to tell the story, how to market it, and they're going to put us into contact with their various people who will be able to add to what it is that we are all putting together, because this is a group effort. When I say we are Dalit, I don't mean me. I don't just mean the World Dhamma Foundation. We are Dalit is each and every person of goodwill who can identify with the struggle and the cause to end discrimination, caste discrimination. We are Dalit. It's based on a speech that was given by John F. Kennedy in 1962 when he went to Berlin. And there was a wall in the city of Berlin that separated oppressed people from quote-unquote free people. And John F. Kennedy, he made the statement, "Ich bin ein Berliner," which was German, meaning I am a Berliner. Those types of statements tell people that they can be included in the movement. If you notice, like the iPhone is a very popular phone. It's a fashionable phone. The iMac is a fashionable computer. And Apple, as a company, they've never invented anything. Apple has not invented a single thing. All that they do is they market products that are already on the market. So they bring together things that are already existing, and they know how to market. And they usually put I in front of it. And that I means you. It means me. So they are actually including us in this product, naming these products after us. And so we are Dalit, it means all of us, inclusive of all of us. I'll have a meeting. I've got meetings scheduled for this coming week with several
people who I'm hoping will be able to consult and to guide us and point us in the proper direction. Your idea about the footage, yes, we do need footage. So any and all footage, any types of photographs, any photographs that you have that are good photographs, high quality photographs, if you can send those to me, if we can use them on the website, we're building a website before we build our own website. So we don't even have our website up yet, World Dharma Foundation. We want to build this website, wearedalit.org, first. So we're putting all of our eggs in that basket first. We want to get that done first. We want to get that on the that out there first. We have to have some kind of a web presence because we plan on moving very quickly, and we want to move in the right way. So anyone who is listening, if you can contact me, if you are interested, if you have any skill sets that you can offer to consult us, to advise us, to give us any ideas that you may have, please feel free again to write me directly, paul@wearedalit.org. And that will be very, very valuable just to know that you are there, and that if I have any questions, if you have specific areas that you know about, if I can ask you, if I can speak with you, if I can write to you, that will be very helpful to me. So, yes, if you do have any film footage, get us the film, send me footage. Send me photographs. Mm-hmm. Sure. And then people are we are on chat window, and there are a few questions for you. And people are going to share a few things as well, like footages, pictures, and all that. We just have 4 to 5 more minutes, and we can take one more question, Paul. The question is, I would like to know your take on what can we learn from the U.S. experience of present Black movement from the point of view of lobbying with politicians in Parliament. This question has been posted by Shrikant Borkar. So, Paul, the question is again, what can we learn from the U.S. experience of present Black movement from the point of view of lobbying with politicians in Parliament? Well, I think there are two things. One is good and one is not so good. The thing that is not so good is that it is not possible to legislate morality. So laws can be passed, as you know, but it doesn't change people's morality. Morality, it cannot be changed by a law because the laws are already in place. It's just that they're not being implemented, which that is the good thing that can be learned, is that since those laws are already in place, since the Constitution, since you have the constitutional rights for non-discrimination, those are things, or that is a thing, and those laws are things that should be used as a fulcrum to basically force the proper implementing of those laws. Since the laws are on the books, a large part of the work has been done. The groundwork has already been done. Educate, agitate, and get things done. Like Dr. Ambedkar said, those laws are in place, and just push and push and push and push. I think from what I've seen,
the biggest problem is the morality. The morality of the people has to be lifted into a higher realm, into a higher level. That, I think, is usually done through making prejudice and discrimination unpopular, unfashionable. And that's what took place in this country, is that we made it unfashionable. It was unfashionable to be a racist, when prior to that it was popular, it was fashionable. Everyone was racist. Many people were, racist. And so we just simply turned it into like a unfashionable thing. It was a bad thing to then be a racist. And we still do have people like that who are racist, but they have to stay silent. They have to be quiet. They can't say it out loud. They cannot practice it in public, because everyone else will come against them. Those are the things that cannot be legislated. That just has to be brought about through public pressure, and you just keep on working in that regard. That's the area we will be working on with the wearedalit.org, is making it unfashionable, because we plan on doing some economic pressures among the businesses here in this country, those businesses that do business there in India. We want their support. We want them to fund you, to fund what it is that you are asking for, non-discrimination. We want those companies to fund you, to support you, to lay pressure upon those persons who are discriminating against our people there in India. And so when we can get that type of corporate backing, then I think all of the dominoes will begin to fall rapidly. And when they fall rapidly, then the Dalit people will be able to breathe free. And by free, I just mean being able to determine your future, where you can determine if you want to become a doctor. There's no barriers to that. If you want to do whatever it is that you want to do, there is no discrimination placed in your way. That's the freedom that we're talking about. It's just non-discrimination. Just practice what's in the books, what's in the law. Okay. Okay. Thanks, Paul. Thanks again. Thank you, Sanjeev. Yeah. So we are almost done with our time today. But if there are any questions, then definitely we'll encourage folks to write an email to Paul. And we will also look forward for the questions which Lalit was asking for. Like if you have any specific items which we can participate and contribute to the work what you are initiating. And so we will look forward for that. We'll share it with the team. But thanks again, Paul, for your time and for coming over and giving us all the details. Okay, thank you for your time. Thank you. Thank you, guys. Thanks again, guys. Please do sign the petition, and then we will share whatever Paul passes on to us. So thanks again for your time, and we look forward to see you next week. Namo Buddhaya, Jai Bhim. Bye.